Today, for the students of BA BSc 6th Sem Maths Paper 1, Real and Complex Analysis. We will do application of double and triple integrals for finding area and volume of surfaces. So consider the rectangle A less than equal to x less than equal to b, c less than equal to y less than equal to d. The area is b minus a into d minus c, b minus a into d minus c. Consider integral c to d, integral a to b, 1 dx dy equal to integral c to d, b minus a dy. So d minus c into b minus a, area of the rectangle. Okay. Again we know that area between the curves y equal to f1x and y equal to f2x and the coordinates x equal to a and x equal to b is equal integral a to b f2x minus f1x dx. Consider the integration a to b integral f1x to f2x 1 dy dx equal integral a to b f2x minus f1x dx, or our area of the region. Consider the integral a to b integral f1x to f2x 1 dy dx equal to integral a to b f2x minus f1x dx, or area of the region. This leads us to the idea that the area of the region T is given by double integral T 1 dx dy. Similarly, volume of the space V is given by triple integral volume 1 dx dy dz. Okay. Volume of the space V is given by this leads us to the idea that the area of the region T is given by double integral over T 1 dx dy. Similarly, volume of the space V is given by triple integral volume 1 dx dy dz. Now find the area of the ellipse x square y square plus y square by b square equal to 1. The given ellipse is x square y square plus y square by b square less than equal to 1. Here x square y square less than equal to 1. Or implies x square less than equal to a square, implies absolute value of x less than equal to a, implies minus a less than equal to x less than equal to a. X square y square plus y square by b square equal less than equal to 1, implies y square by b square equal 1 minus x square by a square, implies y square less than equal to b square by a square, a square minus x square. Absolute value of y less than b by a under the root a square minus x square, implies minus b by a under root a square minus x square less than equal to y less than equal to b by a under the root a square minus x square. Therefore, area of ellipse this x dash ox y dash oy b by a under root a square minus x square minus b by a under the root a square minus x square. So y 0 to b by a under root
a square minus z square dz dx 2 time integral minus a to a b by a under the root a square minus x square dx. तो b by a x by 2 under root a square minus x square plus a square y dot sin inverse x by a minus a to a. तो b by a into पाई ए स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कट गया, पाई ए बी. फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू 25x एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16y यूजिंग डबल इंटीग्रल. क्या है ये? एरिया ऑफ इलिप्स. पाई ए बी. एरिया ऑफ रीजन ये क्या है? बाउंडेड बिटवीन इलिप्स, बाउंडेड बिटवीन हाइपरबोलास, पैराबोलास. द गिवन कर्व्स आर वाई स्क्वायर इक्वल टू 25x, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16y. To find the points of intersection of the given curves, we solve 1 and 2. From second, y equal to x square बटे 16. Putting this value y in 1, we get x square बटे 16 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25x. एक्स की 4 बटे 256 इक्वल टू 25x. एक्स डैश ओ एक्स, वाई ओ वाई डैश, वाई डैश ओ वाई. वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बटे 16, y equal to 5 under root x. तो इसको करो आप. टू फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन कर्व्स, वी सॉल्व 1 and 2. Putting this value of y in 1, we get x square by 16 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25x. implies x की 4 बटे 256 इक्वल टू 25x. x की 4 माइनस 6400 x इक्वल टू 0. x स्क्वायर माइनस 6400 इक्वल टू 0. इधर x इक्वल टू 0 और x क्यूब माइनस 6400 इक्वल टू 0. तो इधर x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 6400 की पावर 1 बटे 3. इधर x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 4 इंटू 100 की पावर 1 बटे 3. फ्रॉम 1 y इक्वल टू 5 अंडर रूट x. फ्रॉम सेकेंड y इक्वल टू x स्क्वायर बटे 16. लेट r बी दी रीजन बाउंडेड बाई द पैराबोलाज r इक्वल टू ordered pair x y 0 less than equal to x less than equal to 4 100 की पावर 1 by 3 x बटे x स्क्वायर बटे 16 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 5 अंडर रूट x. रिक्वायर्ड एरिया बराबर है डबल इंटीग्रल और r 1 dy dx इक्वल टू इंटीग्रल 0 से 4 इंटू 100 की पावर 1 by 3 इंटीग्रल x स्क्वायर बटे 16 को 5 अंडर रूट x 1 इंटू dy dx इज इक्वल टू
इंटीग्रल 0 to 400 की पावर 1/3 y एक्स स्क्वायर बटे 16 से 5 अंडर एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन 0 to 400 की पावर 1/3 5 अंडर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बटे 16 डी एक्स इक्वल टू 5 एक्स की पावर 3/2 माइनस एक्स क्यूब बटे 48 0 से 4 इंटू 100 की पावर 1/2 इक्वल टू 10/3 एक्स की पावर 3/2 माइनस एक्स क्यूब बटे 48 0 से 400 की पावर हाफ 10/3 4 इंटू 100 की पावर 1/3 की पावर 3/2 माइनस 4 इंटू 100 की पावर 1/3 का क्यूब बटे 48 माइनस 0 तो 10/3 इंटू 80 माइनस 6400/48 800/3 माइनस 400/3 इक्वल टू 400/3 therefore required area equal to 400/3 square units. Find the volume of sphere of radius A or find the volume of sphere x square plus y square plus z square less than equal to a square a greater than 0. The equation of the sphere is x square plus y square plus z square equal to a square. Therefore volume of sphere triple integral x square plus y square plus z square equal to a square 1 dx dy dz. Changing to spherical polar coordinates, x equal to r sin theta cos phi, y equal to r sin theta sin phi, z equal to r cos theta. Therefore x square plus y square plus z square equal to r square, but x square plus y square plus z square less than equal to a square. So r square is less than equal to a square implies absolute value for less than equal to a implies 0 less than equal to r less than equal to a, and also Jacobian equal to r square sin theta. The region of integration v dash in terms of r theta phi is given by b equal to r theta phi 0 less than equal to r less than equal to a, and theta like 0 से pi, phi like 0 to pi. The volume of sphere triple integral x square plus y square plus z square less than equal to a square 1 dx dy dz 0 से 2 pi 0 से pi 0 से a mod value of z dr d theta dz. R square sin theta dr d theta d phi 0 से 2 pi 0 से pi sin theta r cube by 3 0 से a d theta d phi. तो a क्यूब बटे 3 माइनस साइन माइनस कॉस थीटा 0 से और पाई a क्यूब बटे 3 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. Show that volume of tetrahedron bounded by the planes x equal to a, y equal to 0, z equal to 0 and
एक्स बाई ए प्लस वाई बटे बी प्लस जेड बाई सी इक्वल 1 इज ए बी सी बटे 6. Let B be the region bounded by the planes x equal to 0, y equal to 0, z equal to 0 and x बटे a plus y बटे b plus z बटे c equal to 1. Therefore z बटे c less than equal to 1 implies z less than equal to c. y बटे b plus z बटे c less than equal to 1 implies y बटे b less than equal to 1 minus z बटे c. y less than equal to b 1 minus z बटे c. x by a plus y by b plus z बटे c less than equal to 1. x बटे a less than equal to 1 minus y बटे b minus z बटे c. x less than equal to a 1 minus y बटे b minus z बटे c. ठीक. वॉल्यूम टेट्राहेड्रल, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, सब्सटीट्यूटिंग तो ए बी सी बटे 6 आ गया. ठीक. जस्ट सिंप्लीफिकेशन है थोड़ी सी. नेक्स्ट फाइंड the volume of the portion of the sphere x square plus y square plus z square equal to a square lying inside the cylinder x square plus y square equal to y. स्फीयर और सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर कितना स्फीयर है. द रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज द पार्ट ऑफ द स्फीयर x square plus y square plus z square equal to a square lying within the cylinder x square plus y square equal to ay. Due to symmetry of the sphere, half of the volume lies above the xy plane and half below it. As x square plus y square plus z square equal to a square, so x square equal to a square minus x square minus y square or x equal to under the root a square minus x square minus y square. Required volume बराबर 2 टाइम डबल इंटीग्रल और z d dy dz. Where r is the region of integration bounded by the circle x square plus y square over y in the xy plane. Due to symmetry, the region of integration is first and fourth quadrant are equal. Double integral r x into dy dx. Required volume 4. There r1 is half of the circle x square plus y square y which lies in the first quadrant. Changing in polar coordinates x r cos theta y r sin theta x square plus y square over a y. तो ये r equal to sin theta. 0 से पाई बाई 2 0 to a sin theta अंडर द रूट a स्क्वायर माइनस r स्क्वायर मॉडल z dr d थीटा. और इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 इंटीग्रल 0 से
a sin theta a square minus r square to power half r dr d theta. और इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 0 to a sin theta minus half a square plus minus r square power minus 2r dr d theta minus 2 इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 a square minus r square की पावर 3 बटे 2 0 to a sin theta d theta minus 2 2 बटे 3 इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3 बटे 2 माइनस a क्यूब की पावर a स्क्वायर की पावर 3 बटे 2 डी थीटा। तो इस तरह से आप निकालोगे ना 2 बटे 9 a क्यूब 3 पाई बाई 4 ये आ जाएगा। ठीक है, ये दिस इज एक्सरसाइज डू एज एन असाइनमेंट, डू दिस एज एन असाइनमेंट एक्सरसाइज टू 3.3। ठीक, नेक्स्ट इज लियोविल डिरिचलेट्स इंटीग्रल, द ट्रिपल इंटीग्रल वॉल्यूम ट्रिपल वॉल्यूम और v x की पावर p माइनस 1 y की पावर m माइनस 1 z की पावर n माइनस 1 dx dy dz तो गैमा p गैमा m गैमा n गैमा 1 प्लस p प्लस m प्लस n। Where v is the reason given y x greater than equal to 0, y greater than equal to 0, z greater than equal to 0, x plus y plus z less than equal to 1 is called Dirichlet's integral. To establish the Dirichlet's integral, x की पावर p माइनस 1 y की पावर m माइनस 1 z की पावर n माइनस 1 dx dy dz गैमा p गैमा m गैमा n गैमा 1 प्लस p प्लस m प्लस n Dirichlet's integral। हेयर v ये दे रखा है v डैश x y z x lies 0 and 1 y lies 1 0 and 1 minus x z lies between 0 and 1 minus x minus y। तो लेट इंटीग्रल बराबर ट्रिपल इंटू वॉल्यूम x की पावर p माइनस 1 y की पावर m माइनस 1 z की पावर m माइनस 1 dx dy dz x की पावर p माइनस 1 y की पावर m माइनस 1 z की पावर n माइनस 1 dz dy dx। इंटीग्रल 0 to 1 इंटीग्रल 0 to 1 माइनस x की पावर p माइनस 1 y की पावर m माइनस 1 z की पावर n 1 माइनस x माइनस y 0 dy dx। Put y equal to 1 minus x into t so that dy equal to 1 minus x into dt when y equal to 0 t equal to 0 and when y equal to 1 minus x t equal to 1। Putting these values in 1 we have I equal to 0 to 1 0 to 1 x की पावर p माइनस 1 1 माइनस x की पावर m माइनस 1 t की पावर m माइनस 1 1 माइनस x माइनस 1 माइनस x into t की पावर n बटे n 1 माइनस x dt dx।
is equal to integral 0 to 1 x की पावर p minus 1 minus x की पावर n minus 1 t की पावर n minus 1 minus x 1 minus t की पावर n बटे n 1 minus x dt into dx 1 by n integral 0 to 1 x की पावर p minus 1 minus x की पावर n plus n t की पावर n minus 1 minus t की पावर n dt dx बीटा m n plus 1 dx ये कॉमन ले लिया 1 by n बीटा m n plus 1 बीटा t m plus n plus 1 1 by n gamma n plus 1 बटे gamma m plus n plus 1 gamma p gamma n plus 1 बटे gamma t plus n plus n plus 1 gamma p gamma n gamma 1 plus p plus n plus n. Thus B have triple in volume x की पावर p minus 1 y की पावर m minus 1 z की पावर m minus 1 dx dy dz gamma p gamma n बटे gamma 1 plus p plus n plus n. So next theorems we will do in the next lecture I think. So currently we prove that this will hold where d is the reason x greater than equal to 0 y greater than x plus y less than equal to h. Let the transformation be x equal to hu y equal to hv so that dx h du dy h dv also x plus y less than equal to h becomes hu plus hv less than equal to h, that is u plus v less than equal to 1. The region d in xy plane becomes the region d dash in the uv plane where d dash equal to uv such that u greater than equal to 0 v greater than equal to 0 and u plus v less than equal to 1. D dash equal to uv 0 less than equal to u less than equal to 1 0 less than equal to v less than equal to 1 minus u. Given integral equal to double integral d x की पावर n minus 1 y की पावर n minus 1 dx dy hu की पावर n minus 1 hv की पावर n minus 1 h square du dv क्योंकि dx dy changes to h square du dv h की पावर m plus n 0 to 1 0 to 1 minus n a की पावर n minus 1 a की पावर n minus 1 dv du h की पावर m plus n इंटीग्रल 0 to t a की पावर m minus 1 u की पावर m minus 1 v की पावर n बटे n 0 to 1 minus u du. तो ये क्या हो गया डबल इंटीग्रल ऑफ x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू h x की पावर m minus 1 y की पावर n minus 1 dx dy gamma m plus n plus 1 h की पावर m plus n. Liouvill is extension of Dirichlet's integral if x, y, z are all positive such that x plus y plus z like h1 and h2 then ये होल्ड करेगा है. तो थैंक्स, we will meet in the next lecture and if there is any problem and we have already done it, we have just revise it. We have already done this topic in the classroom and we have revised. Thank you.